Hello friends, in this video we will learn the conditions in C language. So conditional statements in C language are basically a portion of a code block that gets executed when some particular condition is matching or is true, and a portion of a code block gets executed when a particular condition is not meeting or when it is a false. So basic syntax, when we are looking at the syntax, it looks like this. So let's say we are talking about if else statements. If the opening and closing bracket, in which there is a boolean expression which gets evaluated to two possible values, either true or false. And if this expression is evaluated as a true, then this code block gets executed when the expression is true. If the expression here gets evaluated to false, then this code blocks gets executed. Okay, so this is a syntax and this is a simple if else statement. So we have already seen that if else statement in divide by zero expression in the previous video, but here we will learn this if else condition with some basic example of even and odd number. So in the problem statement of even and odd number, we will ask user to enter a value and a numeric value, and that numeric value we will cross check whether this is a true or whether that value is even or odd, and based on that condition we will print the given number as even if the condition is true, and a given number as an odd number when the condition is false for the even number. So yeah, so here is a program for even number and odd number, where an integer number is declared at the top. We are asking user to enter any number, and we are reading that number using scanf %d and number. Now this operator is a mod operator in C. What it means, like number mod 2 means number divided by 2, and it doesn't give the division, rather it gives the remainder. Number mod 2 expression, actually how it works I will show you in a notepad. Number mod 2, so let's say your number is 100, so 100 mod 2 is basically 100 divided by 2 is 50, and reminder is 0. Okay, and let's say this number is 101 mod 2, again the division is 50, but this time reminder is 1. So whenever you mod any number with 2, the remainder is either 0 or 1. Remainder is 0 for even number, and remainder is 1 for odd numbers. So we will use this expression here, number mod 2 equals to 0. Double equal to is the condition to check the equality. Okay, so this is how the program is already written over here. It is like number mod 2 is 0, then the given number is even number, else given number is odd number, and we are returning 0 to operating system at the last, because our main function returns integer value. So let's run this program and see. 100 100 is even number, which is correct. Okay, let me run this program again and show you. 99 99 is odd number, which is again correct. So what is happening here? So when we are giving 99 number mod 92, the remainder is 1. That's why it is coming to this block. And when we have given 100,
number mod 2, number is completely divisible by number 2, which is 50, and remainder is 0 here. So it is coming here and it is showing even number for the any even number over there. So yeah, so this is a simple program. So आज की वीडियो में हम लोगों ने यही देखा है कि कोई इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट हम देखना चाहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज मतलब ऐसा होता है कि कोई कंडीशन मीट होने के बाद यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ओके, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट विद इफ, देन इन द ब्रैकेट हम एक बूलियन एक्सप्रेशन रखते हैं। वो एक्सप्रेशन ट्रू होने के बाद ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स रहा तो दूसरा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं सी लैंग्वेज में। इसे एक एग्जांपल के साथ देखने के लिए हम इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोग्राम देखेंगे। इवन नंबर और ऑड नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी विल आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर क्या करता है? बेसिकली को किसी भी नंबर को 2 से मॉड 2 जब हम करते हैं तो वो उसका भागाकार करता है, वो उसका डिवीजन करता है। पर डिवीजन करने के बाद जो डिवीजन आता है वो नहीं देता, वो रिमाइंडर देता है। जैसे 100 mod 2 is 100 is completely divisible by 2, so 15 to the 100 that we know, और 100 minus 100 यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। जबकि 101 अगर यहाँ होता है तब भी हम 50 ही डिवीजन आता है, पर वहां पर यहाँ माइनस 100 होगा और 1 रिमाइंडर आएगा। तो मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर 0 या 1 देगा किसी भी नंबर का, और उस रिमाइंडर के बेसिस के ऊपर हम इवन नंबर या ऑड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी विल मेक यूज ऑफ मॉड ऑपरेटर and we will make use of this conditional statement and we will figure it out whether the given number is even number and odd number with this simple program। यहाँ पर हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, एक इंटीजर नंबर डिक्लेयर किया है, यूजर से हमने कहा है कि एक नंबर ऐड करे। यूजर ने जब भी स्क्रीन के ऊपर वो नंबर देगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद तो ये लाइन आ जाएगी, हम उस नंबर को रीड करेंगे। फिर इफ के अंदर वो बुलियन एक्सप्रेशन होता है। सो बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर हमने वही किया है कि नंबर मॉड 2 किया है। ये जो भी वैल्यू आएगी उसको, ये कंपैरेटर ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। यहाँ पर जहां पर डबल इक्वल टू लिखा है, लेट मी क्लोज दिस विंडो तो ये ज्यादा शायद आपको दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पर डबल इक्वल्स टू 0 अगर आता है तो वो हमारा इवन नंबर होता है, अदरवाइज हमारा ऑड नंबर होता है। ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इनिशियली अगर मैं 17 प्रेस करूँ यहाँ पर, ओके 17, तो 2 8 16 रिमाइंडर आएगा 1, तो इट विल बी ऑड नंबर। तो ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट हो गई है और ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, जो कि आप देख सकते हैं। हम इसे फिर से एक रन करते हैं। इस बार हम 10 नंबर दे देते हैं। 10 नंबर देने के बाद 2 is completely divisible by 10 is completely divisible by 2, 2 5 is 10, 5 डिवीजन आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा उस केस में। तो यहाँ पर आप रन करो, एंटर करो, यहाँ आपको आएगा 10 is even number, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। तो दिस इज अ सिंपल इफ एल्स कंडीशन। अब ये इफ इल्स जो कंडीशन है वो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम एक लेवल और बढ़ाते हैं और हमारा दूसरा प्रोग्राम के साथ हम वो समझेंगे। तो वो कंडीशन रहेगी इफ एल्स इफ एंड अगेन एल्स। सो इफ एल्स इफ और एल्स में क्या होता है ना कि पहले हम एक कंडीशन इवैल्यूएट करेंगे, वो सही रही, अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो फर्स्ट कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर फर्स्ट कंडीशन को मैं ट्रू 1 बोलता हूँ, ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है, दिस ब्लॉक्स गेट एग्जीक्यूटेड। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होती है तो सेकंड ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड, और दोनों कंडीशंस जब फॉल्स होती है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, in case then this gets executed। so ये होती है if else if and else, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ये उसका सिंटैक्स है। तो एक सैंपल प्रोग्राम हम इसका क्या बना सकते हैं
कि गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। ओके, तो इसको हम चेंज करेंगे। इफ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो को इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ हमने इक्वालिटी ऑपरेटर और मॉड ऑपरेटर देखा था इवन ऑड के केस में। यहाँ हम ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर देखेंगे। इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, गिवन नंबर इज पॉजिटिव नंबर। यहाँ में और एक एल्स इफ लगेगा, तो मैंने यहाँ एक इफ ऐड कर दिया, कंडीशन ऐड कर दी। इफ नंबर इज लेस देन जीरो, ओके, तो ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले ऑपरेटर्स है सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, यही ऑपरेटर्स होते हैं। सो गिवन नंबर इज निगेटिव नंबर। एल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे, अदरवाइज वो नंबर रहेगा जीरो। इट इज अ जीरो नंबर, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नॉट नेगेटिव। ओके, तो इस प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मैं नंबर कोई भी नंबर देता हूँ जो 0 से 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो यहाँ आना चाहिए। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो यहाँ आ जाना चाहिए, और नहीं तो वो यहाँ आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। 10 10 10 is a positive number, correct? Minus 5 is a negative number, correct? 0 0 is a 0. Okay, it is not positive, not negative, it is a zero number. So it is working properly. क्या होगा अगर हम so I think so I will again explain this same. Now this is like if and else if together, and then there is another else. So basically if we have more than one expressions to evaluate, okay, conditional statement not necessary we have one two conditions only, one if and another else. So that is not always the possible scenario. There could be a scenario in which you only have this portion, if you don't have to do anything into the else statement, or you have one if and one else condition, or you may have if and else condition. Okay, so let's say this is one example in which there are like we have two boolean expressions which we want to evaluate, and based on the matching criteria the respective block will be executed here. So basically let's say the first condition is true, first code block will get executed and these two code blocks will not get executed, and so on for the remaining conditions. So let's check uh, whether the given number is positive, whether the given number is negative, or whether the given number is zero. Okay, so here is the code. I have declared one number variable. I am reading that variable and assigning the variable from the user into this number variable. And if the number variable is greater than, this sign represent greater than, the number greater than 0 evaluates as a true or false here. If this condition becomes true, the number is positive. Then there is a reverse condition, number is less than 0. If this condition gets evaluated as a true, then number becomes a negative number, or otherwise number is a 0. So let's run this program, and I am initially giving a positive number 7. Okay, 7 is a positive number. Okay, so this code blocks gets executed because the first condition is matching here. Okay, now I will give another number minus 99. Okay, minus 99 is a negative number, so this condition is getting executed. And what if I give the 0 value? Both the conditions will be evaluated as false, and this else block will be executed, and 0 is a 0. Okay, what if I give some condition which will match two expression? Okay,
if the number is greater than or equal to 0, then I am saying, so this is a wrong thing, but I just want to see the behavior of this code block. Now if I give a 0 number, okay, so this condition is also correct and this condition is also correct. Okay, so let's see what happens in that scenario. Okay, there is error token. Okay, okay, so it is not like, this is not the right way of putting this operator, this is the right way of putting the operator. Yes, and now I give the 0, so I think it will execute the first block only, number is positive. Okay, so even if two conditions are matching, whichever is written at the top, that is getting executed. So why I am showing it to you, whenever you are writing these conditions, make sure the order is proper so that you get the expected result correctly. So this is our if else and nested if else. We will also look at the switch case in our subsequent video. Thanks for watching this one. Thank you.